Today's topic is factors affecting rate of a chemical reaction. So today we are going to discuss about the factors they are affecting rate of a chemical reaction. Rate of a chemical reaction depends on what are the other factors. So different factors affecting rate of a chemical reaction are concentration of reactant. Rate of a chemical reaction varies with concentration of the reactant. In case of gaseous reaction, rate varies with pressure of the reactant. Rate of a chemical reaction varies with temperature. Everybody know it. When temperature increases, rate of a chemical reaction increases. Rate of a chemical reaction depends on catalyst. Catalyst accelerates a chemical reaction. So how rate increases with catalyst? How rate changes with catalyst? How rate varies with temperature? How rate varies with concentration? We will discuss one by one. So first of all, we are going to discuss about the dependence of rate on concentration of the reactant. How rate of a reaction depends on concentration, we are discussing now. So rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. It has been experimentally observed that rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. That means when concentration of the reactant increases, rate of the reaction increases. When concentration of the reactant decreases, rate of the chemical reaction decreases. Oh, everybody know it. When time increases, concentration of the reactant decreases. So with increase in time, rate of the reaction decreases. जब टाइम बढ़ जाता है देन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है केमिकल रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होता है. सो विथ इंक्रीज इन टाइम फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन rate decreases because concentration of reactant decreases with time. When a chemical reaction is when a chemical reaction rate of a chemical reaction when rate of a chemical reaction is represents in terms of concentration of the reactant, that equation is known as rate law, rate expression और रेट इक्वेशन. जब एक केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन. So let us consider a general reaction. A moles of reactant A reacts with B moles of the reactant B, so produces the product. So let us consider rate expression. Rate expression is also known as rate equation or rate law, rate expression for the above reaction. Rate directly proportional to concentration of the reactant A and concentration of the reactant B. So reactant A and reactant B दोनों का definite exponent होगा, power होगा. Let us consider exponent is X for A and exponent is Y for B. So when we remove the proportionality sign, then we have to put a proportionality constant K into concentration of reactant A into concentration of reactant B. So this is the rate expression or rate equation for this general reaction. हम लोग ये रिएक्शन के लिए ये रेट एक्सप्रेशन क्या किया, हम लोग कंसीडर. So rate of a chemical reaction then depends on concentration of the reactants. A is the concentration of the reactant A, B is the concentration of the reactant B. So A and B का concentration जब बढ़ेगा, सो केमिकल रिएक्शन का रेट कितना बढ़ेगा, ये किसका ऊपर में डिपेंड करेगा, एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई का ऊपर में डिपेंड करेगा. सिमिलरली जब ए एंड बी का कंसेंट्रेशन जब डिक्रीज होगा, केमिकल रिएक्शन का रेट कितना डिक्रीज होगा, ये किसका ऊपर में डिपेंड करेगा, ए एंड बी का एक्सपोनेंट का ऊपर में डिपेंड करेगा. In this equation, this is
This equation is known as rate equation, rate law, or rate expression. In this equation, K, it is known as rate constant or velocity constant. It is known as rate constant or velocity constant. K is known as rate constant or velocity constant. So this is the rate equation for this general reaction. Let us consider. हम लोग consider किया. So ये जो rate expression में exponents x and y, exponent x and y, exponent means power, may or may not be equal to the stoichiometric coefficients A and B. केमिकल रिएक्शन में, ये जो जनरल केमिकल रिएक्शन में A and B, these are the stoichiometric coefficient. These are represent the number of moles of the reactant. So ये जो stoichiometric coefficient A and B का वैल्यू एक्सपोनेंट x एंड y का साथ इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. किसी रिएक्शन के लिए क्या होगा, एक्सपोनेंट x एंड y, स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये दोनों का साथ इक्वल होगा. और किसी इक्वेशन के लिए x एंड y का वैल्यू x एंड y a एंड b का साथ इक्वल नहीं होगा. सो पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एक रेट एक्सप्रेशन, इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. हम लोग एक रिएक्शन को देख के डायरेक्टली रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता है. ये जनरल रिएक्शन के लिए भी हम लोग रेट एक्सप्रेशन को क्या किया, कंसीडर किया. हम लोग सपोज किया दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन. सो पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली. ये जो रेट एक्सप्रेशन में x एंड y, एक्सपोनेंट x एंड y, इन दोनों का वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली. सो जब एक पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रेट एक्सप्रेशन होता है, इन दैट पर्टिकुलर रेट एक्सप्रेशन रिएक्टेंट का जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो हम लोग कंसिडर किया फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस जनरल रिएक्शन, order with respect to reactant A is how many, x, and order with respect to reactant B is how many, y. So particular एक reaction के लिए particular rate expression experimentally निकाला जाता है. From the rate expression हम लोग particular एक reaction का क्या mention कर सकता है, order mention कर सकता है. जैसे कि ये जनरल रिएक्शन के लिए हम लोग ये रेट एक्सप्रेशन कंसिडर किया. सो हम लोग रेट एक्सप्रेशन से ये रिएक्शन का बारे में, ऑर्डर का बारे में बता सकता है. जैसे कि फॉर दिस रिएक्शन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज हाउ मेनी एक्स, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी इज हाउ मेनी वाई. सो फॉर द अबोव रिएक्शन, फॉर द above reaction from the rate expression, it is observed that order with respect to a is how many, a is x, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में a का एक्सपोनेंट कितना है, x. सिमिलरली ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b is how many, y. So how many overall order for the above reaction, x plus y, sum of the exponents of the reactant in the rate expression is called order of the reaction. So how can I define the order of a reaction? Order of a reaction is the sum of the exponents of the concentration of reactants in the rate expression or rate equation of a chemical reaction. So what is the order? Order of a reaction is the sum of the exponents of the concentration of reactants
in the rate expression of a chemical reaction. So particular एक chemical reaction के लिए particular rate expression determine किया जाता है experimentally. So particular एक reaction के लिए order हम लोग कहाँ से बता सकता है? From the rate expression. Rate expression में reactant दोनों का जितना exponent होगा, दोनों exponent को plus करने से that is जितना order निकलेगा that is the overall order of a reaction. और order it is a experimental quantity. particular एक reaction के लिए order experimentally determine किया जाता है. और order it is whole number. It may be 0. So order of a reaction is an experimental quantity. That means for a particular reaction order determine किया जाता है experiment करके. particular एक reaction के लिए experiment करके ही reaction का order determine कर सकता है. order of a reaction may be whole number means 1 2 3 like that. order of a reaction may be whole number or fraction. एक reaction का order whole number भी हो सकता है, fraction भी हो सकता है, like 1/2 3/2 5/2 like that. So particular एक reaction के लिए order determine किया जाता है experimentally. So order of a reaction may be whole number like 1 2 3 4 like that, or it may be fraction like half 3/2 5/2. So let us consider few examples of reaction. Suppose it is a reaction. Nitric oxide 2 moles reacts with oxygen gas, produces nitrogen dioxide. So for this reaction rate expression is given. This is the rate expression for this reaction which is determined experimentally, जिनको experiment करके determine किया. So this is the rate expression or rate equation for this reaction. So how many overall order of this reaction? Order for this reaction NO nitric oxide इनका exponent 2, O2 इनका exponent 1. So how many order of this reaction? 3. Overall order for this reaction is 3. Order for this reaction with respect to NO is how many? 2. Order with respect to O2 is how many? 1. But overall order for this reaction is how many? 3. So this is a third order reaction. जब order 1 होता है reaction is called first order. Order 2 होने से reaction is called second order. Order 3 होने से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ऑर्डर में भी 0. जब एक रिएक्शन का ऑर्डर 0 होता है दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो वन मोर एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CaCl3 it is chloroform reacts with chlorine produces carbon tetrachloride plus HCl. For this reaction rate equal to K into concentration of chloroform and concentration of chlorine to the power half. So how many order for this reaction? Chloroform concentration of chloroform इनका exponent 1 plus half. So this is equal to 2 plus 1 2 3/2. That means this is equal to how many? 1/5. So this is an example of a reaction which order is fraction. One more example of a reaction. Ammonia gas decomposes on the surface of platinum, produces nitrogen and hydrogen gas. So experimentally it is observed that rate expression for this reaction K into concentration of ammonia to the power 0. So how many order of this reaction? This is a zero order reaction. How many order of this reaction? Zero order reaction. So particular एक reaction के लिए rate expression याद करना जरूरी नहीं है,
क्योंकि पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर लिखो बोलने से रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, गिवन होगा. सो ये जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस फॉर दिस रिएक्शन. दिस इज द रेट एक्सप्रेशन. फ्रॉम दिस रेट एक्सप्रेशन we can mention the order of reaction. So how many order of this reaction? 0. So what is the zero order reaction? Zero order reaction means ये जब number होगा, particular number, इसका जब exponent 0 होगा, this is equal to 1. That means zero order reaction का rate concentration of reactant का ऊपर में depend नहीं करता है. So what are the zero order reaction? Rate of a zero order reaction, rate of a zero order reaction is independent on the concentration of reactant. So zero order reaction का rate of a zero order reaction is independent on the concentration of reactant. किसी भी zero order reaction का rate रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन का ऊपर में डिपेंड नहीं करता है. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का साथ वेरीज नहीं होगा. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट अदर फैक्टर्स का ऊपर में डिपेंड करता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ऊपर में डिपेंड नहीं करता है. सो पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा? पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए के का यूनिट रिएक्शन का ऑर्डर का ऊपर में डिपेंड करता है. जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर किया, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट. फॉर दिस रिएक्शन rate expression, let us consider rate equal to k into concentration of a to the power x concentration of b to the power y. So this is the rate expression for this reaction. Let us consider. Then k equal to k rate divided by concentration of a to the power x concentration of b to the power y. So what is the rate? Rate equal to the concentration divided by time. जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हम लोग डिस्कस किया था व्हाट इज द रेट, हाउ कैन यू डिफाइन द रेट. रेट इक्वल टू सिंपली कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इनटू 1 बाय concentration of a to the power x concentration of b to the power y. So concentration divided by time 1 by ये दोनों भी concentration to the power x concentration to the power y, that means concentration to the power x plus y. So different order of reaction के लिए k से k का यूनिट निकाला जाता है. So हम लोग as for example हम लोग कंसिडर किया A is converted to B product. Suppose given in the equation this is a first order reaction, sorry zero order reaction, this is a zero order reaction. So for this reaction order is mentioned. जब order mention होता है particular एक reaction के लिए हम लोग rate expression लिख सकता है. तो rate expression for this reaction rate equal to k into concentration of A to the power 0. Why exponent of the concentration of A is 0? Because it is a zero order reaction. So concentration of A to the power 0, this is equal to 1. So k equal to what? Rate. So what is the rate? Rate is concentration divided by time. So what is the unit of concentration? Moles per liter. What is the unit of time? Second. So moles per liter per second. It is the unit of k for which order of reaction? Zero order reaction. So zero order reaction के लिए k का यूनिट क्या है? Moles per liter per second. Similarly, one more example. Suppose A converted to product given in the equation. This is a first order reaction. So how can you determine what is the rate law for this reaction? Rate equal to k into concentration of A. A का exponent कितना होगा? 1. क्योंकि order of this reaction how many? 1. So k equal to then k equal to rate divided by concentration of A. So what is the rate concentration divided by time, or this is also concentration 1 by concentration. Then concentration cancel, finally रह गया क्या? 1 by time. Time का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो पर सेकेंड. तो पर सेकेंड इज द unit of rate constant k
for which order of reaction? First, let us consider one more reaction. This is the reaction. Order for this reaction is suppose second order reaction. Then rate equal to K into concentration of A to the power how many? 2. Then K equal to rate divided by concentration of A to the power 2, to rate equal to concentration divided by time 1 by A is concentration, तो concentration का square होगा. 1 concentration ऊपर नीचे cancel हो गया. Then it is finally 1 by concentration into 1 by time. That means concentration का unit हो गया, concentration का unit है moles per liter into 1, टाइम का यूनिट है सेकेंड. तो फाइनली क्या हो गया? लीटर पर मोल पर सेकेंड हो गया. पर लीटर ऊपर चला गया, लीटर हो गया. पर मोल ऊपर कर दिया, पर मोल ऊपर कर दिया, पर मोल, लाइक दिस. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सो लीटर पर मोल पर सेकेंड. सो जब पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए जब ऑर्डर गिवन होगा फॉर दैट रिएक्शन, we can write rate expression. From the rate expression we can determine the unit of rate constant K for a particular reaction.